All right, we are good to go. So first of all, thanks a lot for doing this, Abhishek. I really, appreciate you taking out the time. And for the folks who will be listening to this podcast, I want you to actually give a short 1 minute or 2 minute long intro about yourself, so that the viewers who will be listening to you, they would actually, get to relate with you. Okay, hi Bhuvanyu. Thanks for inviting me to the session. It's my pleasure. Thanks everyone who will be listening or are listening. Obviously, they're not listening right now, but who will be listening to this podcast of yours. So, hi guys. So I'm Abhishek. I actually head the Windmill Capital Private Limited. It's a small case manager. It's a research analyst. So we make model portfolios or small cases, a lot of model portfolios covering a lot of topics, lot of strategies. And yeah, I mean, we are the research arm of small case technologies. Right. Interesting. So, Abhishek, so you have been like at least working with the markets and, making money out of stock markets for more than 6 years now. Can you share the story of how you began with, stock markets? How did you actually decide that, investing, becoming a long-term investor and whatnot? How did that come into picture? Yeah. So when I started back, I think it's been 6 years, 7 years in Smallcase Technologies. Yes. Uske pehle, like when I was fresh, graduated from the college. So I passed in 2014, and uske baad I joined an investment bank. Okay, from the campus placement only. So वहाँ पे the work was pretty much similar. We used to make baskets for institutional clients. Okay, Yes. stock baskets, futures basket, single stocks over. And that time we were used to do, and उस समय हम सोचा करते थे कि मतलब this kind of instrument was not present in India. Like उसके पहले India में like used to के single stock tips चल रही हैं, या mostly people stock market में ऐसे invest करते हैं. या आप बता दो, family friends से पूछ लिया कि कौन सा stock करना है. So all these things used to happen. Yeah. And so मेरे जो founders हैं small case के, so they are my seniors from the college. So they decided to open this thing यार, retail के लिए कुछ ऐसा है नहीं, and we should go ahead and do this for retail clients, right? Yes. In India. Yes. So that's how the idea was born. The small case started, and we joined I joined the team initially at the very early stage. और yeah, तब से मतलब the journey began. Okay. We are making small cases since 2016, and yeah, I think the first small case जो पहला live भी किया था वो 2016 में जब platform पहली बार launch हुआ था, तब से we have been making. So we are the research arm of small case. We do all the research work, make small cases, and कुछ भी अगर team को research expertise चाहिए होती है financial markets related, so we provide that also. So this is a broad holistic job. So this is how I started, and since hence been with the company ever since. Right. So yeah. So this is the broadly my journey. And how small was the team when you had joined it with the small case? Oh, okay, yeah. So we were 6 people, 3 founders and 3 of us. And in 2000, this was in 2015, ending 2015, like in December. Okay. So yeah, 6 people only were working, and then more people started joining from 2016. By 2016, and हम लोग कुछ 10-15 लोग हो गए, फिर बढ़ता गया. Now that I think the team size is very huge. A small case, it's like 280 people, somewhere around 280-300ish. Wow. So आपकी risk appetite तो बहुत high होगी. 6 people team को आपने join करने का आपने decide करा. हाँ, मेरी risk appetite बहुत high थी यार उस समय. मतलब as I told you, मैंने 1.5 साल काम किया था उसके पहले investment bank में. और that time मतलब it was like कि हाँ मतलब बहुत prestigious job है. आप अच्छे से college से pass out हुए हो, तो job भी अच्छी लगती है, and parents are like coming from middle class family, it's a very good thing to happen for anyone, right? Yes. So that time, like I was like, yeah, the idea seemed good, and my founders obviously were very good, and I used to like working with them already before joining Smallcase. But okay, why not try one thing? Like उस समय मतलब आप उस एक एज पे होते ना कि आप ले सकते हो उतनी रिस्क, right? So yeah, मतलब the best thing with me, what happened is like my parents always supported me. They never interfered. Like उन्होंने कभी बोला कि तुम मतलब 10 लाख की जॉब छोड़ के ये कर रहे हो या 20 लाख की जॉब छोड़ के ये कर रहे हो, जो कि बहुत से पेरेंट्स करते हैं. Yes. In my surroundings also. But yeah, they never seen that too. Like you are good. They are saying like you are good enough to take a good decision. So like I think it's on you what to join. Okay. But yeah, that time it was a risky decision, but I think
not regretting. Obviously, now it's become pretty huge. So it was a wise decision, I think. Now, So यहाँ पे थोड़ा hindsight bias apply हो रहा है क्योंकि the Correct. decision that you took hindsight में it was a risk. लेकिन right now looking back at it is the best decision of your life, right? correct. True. Very Yeah, true. 100%. So my first question to you would be in this case, is the mistakes. Like, in 2020, we saw the highest number of Demat accounts being opened. So many people started investing. It was maybe through YouTube, maybe it was through Instagram that, finance has somehow become cool once again. Like it used to be cool back in 2008, जब Morgan Stanley and the Lehman Brothers crash did not happen. But since then, 2008 से लेकर 2020 तक जो है ना investments के बारे में बहुत कम लोग बातें करते थे. 2020 post, it has again become so cool, and a lot of new beginners are entering the stock markets. So can you give me like what kind of mistakes all these beginners make when they are going to enter the stock market, be it swing trading, be it investing for short term, or investing in companies which are penny stocks but thinking that they will go big? So correct, you have pointed out correct कि the biggest mistake is कि आके single stocks में खेलना, I mean इन्वेस्ट करना. फिर इन्वेस्टिंग से बेटर है कि मतलब वो लोग जनरली जो मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स बिगनर्स होते हैं, मतलब किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो आप सुन के या कुछ पढ़ के, बिकॉज आप आते हो राइट मार्केट में, यू आर नॉट, आपको पता नहीं अगर इसके बारे में, तो यू लर्न लॉट एंड यू एंटर द मार्केट. बट देन व्हाट हैपेंस इज कि वो द डायरेक्शन बिकम्स कि सिंगल स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, राइट. एंड 1-2 महीने चलेगा, उसके बाद निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस में आप आ जाते हो, राइट. सो बिगिनर्स में मतलब ये काफी है कि मतलब दे rather than focusing on investment पहली बार, वो लोग धीरे से ट्रेडिंग में घुस जाते हैं. Precisely. And this is like मतलब to be very frank, like sharing a anecdote on this basis, मतलब शुरू में जब हमने स्मॉल बिजनेस किया था तो we were making portfolios. So personally like मैंने कभी भी सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, it's been equity mutual funds और Smallcase directly. So हमेशा तो पोर्टफोलियो वाला अप्रोच रहा है. बट ट्रेडिंग उस समय लाइक हमने भी मतलब एक दिन में मतलब 30-40 हजार उड़ गए थे. सो ये एक ट्रेड ले लिया था उल्टा, और सब पता नहीं होता है इतना, मतलब शुरू में. सो आई थिंक वन मोर थिंग, ये बिगनर्स में बहुत अच्छा काम करता है. मतलब आप ट्रेडिंग करते हो तो इट्स लाइक फर्स्ट 2-3 months you're very profitable, and which happens like with most of the people. I don't know how it happens, but it happens. And वही है, फिर एक साल बाद पूछोगे आप लॉस में चल रहे हो, एंड ज्यादातर लोग अगेन, कुछ लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, बट या मिस्टर नितिन कामत recently I think pointed out that only 1% of the people make more than FD. Yeah, exactly. So stats clear hai. I mean, nothing to talk about there. But yeah, this is the biggest mistake of venturing into trading. If you have enough knowledge, enough resources, and you have a plan, right? Yes. Okay, I will start with 20,000 and I'll see how much I make the next year, right? Yeah. Then it's okay. You stick to your plan. You have proper risk management. But कितने ही लोग ऐसे हैं जो नए मार्केट में आके रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, पता भी नहीं होता लोग पोजीशन साइजिंग के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, राइट. तो इट गोज हेवायर. इट्स लाइक पूरा टिप्स वाला ही काम होता है स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे में, और टेक्निकल्स लगा के ट्रेडिंग करना मतलब ठीक है, इट्स गुड, बट देन अगेन यू टेक्निकल चार्टिंग, आई डोंट नो हाउ मच इट वर्क्स. जिन लोगों के लिए वो काम भी करती है वो बहुत ही well equipped actually technical chartings, but they have good amount of software and data with them, and then they are able to pull those amount of profits. But beginners के पास नहीं है ना वो सब चीजें. Precisely. Sophisticated software नहीं है, वो नहीं है, so it's very easy nowadays, though things are becoming very much free में काफी सारी चीजें मिल रही हैं. But still मतलब I think this is the mistake which people make, that focus on directly focusing on trading and not doing proper investment. So I think the first thing which new people who are entering the market should do is, like, when you gain a lot of knowledge by reading a lot of books of maybe Benjamin Graham or Peter Lynch, investment books, or any trading book for that, say, you should always first try to make your investment journey before, unless you are very much learned, like I said, जैसे भी बात किया, stick to your investments for your, analyze the market, देखो अपने portfolio कैसे चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं. कुछ स्टॉक ऊपर जाएंगे एक साल, कुछ स्टॉक नीचे आएंगे, आपने ऐसे पोर्टफोलियो खरीदा तो आप एनालाइज तो करो उनको क्यों हो रहा है ऐसा, राइट. वहीं से फिर डू दैट. मतलब थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि पहले इस महीने में आके आप ट्रेडिंग इंट्राडे करने लगे, तो मतलब हाई चांसेस है कि आप लूज करोगे. सो दिस इज द मिस्टेक दैट पीपल फॉलो. और बाय चांस मतलब बाय लक, लाइक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. मतलब एज आई टोल्ड यू कि मैंने तो सीधा स्मॉलकेस और इक्विटी स्टार्ट किया था, तो शुरू से पोर्टफोलियो वाला अप्रोच रहा है. So that is what pretty good for me and for
some of my like office colleagues also, because we are in the same zone. But I think this is the mistake which people should avoid. They should start, if they are new to the market, they should start with some very niche form of investing. Investing में भी आप asset ETFs में कर लो, right? ETF के portfolio में कर लो, stock में भी मत करो, but you should analyze in these kind of baskets before moving to. Right. So यहाँ पे हम कैसे pinpoint कर सकते हैं that the beginners who are coming into the capital markets, they are thinking of from a short term perspective rather than long term perspective. Correct. मतलब immediate वो चाहिए, satisfaction चाहिए, ROI immediate चाहिए, instant gratification जो बोलते हैं हम लोग कि मतलब 2 साल में 1 साल में पूरा पैसा बनाना है, मतलब ठीक है वो बन सकता है कुछ लोग ऐसे टेल की, मतलब जो वही है, लेकिन वही स्टार्ट्स पे जाए तो वही 1% वाली बात आ जाएगी. So do you really think that you are 1%? If yes, good. No, if yes, good. Some people know their potential. Okay. Some people may know their potential. ना, we cannot say कि नहीं यार तुम तो कर ही नहीं सकते हो. है वो अच्छा बंदा, उसको पता है क्या करना है. So, but you should seriously ask this question to yourself before you begin. Investment or trading journey. कि यार तुम 1% में हो नहीं और नहीं हो तो you should always stick to basics first and then move on ना. Right. आप gradually अपनी learning बढ़ा के market में play करो, practical experience तो लो, सीधा आके मतलब चाहे theoretical books पढ़ के सीधा आके ऐसे trading नहीं जाती वही टाइम. हाँ, you're right, 100%. Dynamics ही अलग है. So yeah, मतलब हमने 4 साल ग्रेजुएशन करी, उसके बाद ही हम जॉब में आए ना, ऐसे नहीं पहले दिन से ही जॉब मिल गई थी, तो स्किल एक सीखी है उसके बाद जॉब मिलती है ना. So exactly. लाइफ लेसन ही यही चल रहा है, तो आप मार्केट में भी उसको सेम ही तरीके से अप्लाई करो. अच्छा, बट इस यहाँ पे एक डाउट भी बनता है ना फिर कि फॉर दोस हु आर एक्चुअली गोइंग टू गेट गुड रिटर्न्स ऑन स्विंग ट्रेडिंग या फिर जो है ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, उसकी एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी, वहां पे जाके किसी को लॉस होगा. बट देन देयर आर सम फोक्स हु विल जिनका लॉस स्टार्टिंग के पहले दूसरे तीसरे दिन में ही हो गया एंड दे विल नेवर कंसीडर एंटरिंग द स्टॉक मार्केट. वहां पे तो हैबिट ही टूट गई. वेरी गुड पॉइंट. और हमने जो पोर्टफोलियोज बनाना स्टार्ट किए थे तो ये बहुत आता था, बहुत क्वेश्चंस भी आते थे कि यार मेरे को पहले ही स्टॉक में लॉस हो गया, मैंने एक स्टॉक खरीदा उसमें लॉस हो गया, राइट. ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती है लोगों, मतलब मेरी फैमिली में देखा हुआ है 2010s में और मतलब 2000s में, मतलब उस एरा में कि फिर आए नहीं, तो मार्केट में आए नहीं वो मतलब म्यूचुअल फंड में भी नहीं आए, फिर उसके बाद वो बस एफडीज और रियल एस्टेट में खेल रहा है, गोल्ड में और उसमें. एग्जैक्टली. तो ये होता है मार्केट में कि अगर आपका पहला ही इन्वेस्टमेंट खराब हो गया ना तो यू विल नेवर रिटर्न एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट. तो इस प्रॉब्लम को ही एक तरीके से देखा जाए तो स्मॉल केस वैसे भी कैटर करता है कि पोर्टफोलियो अप्रोच है तो कितना ही गिरेगा. यस, इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अप्रोच, ठीक है. उसमें भी जैसे मैंने बताया कि आप शुरू में आके अगर एसेट लोकेशन किसी में जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में बनाया है पोर्टफोलियो कैपिटल का, द बेस्ट पोर्टफोलियो, इट्स द मोस्ट फेमस पोर्टफोलियो इन द मार्केट. यस, ठीक है. मतलब वी हैव सीन इट्स अ लाइव हिस्ट्री हो गई अब तो उसकी 3.5 साल की. मैं तो बैक टेस्ट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, बट जब हमने 2018 में लॉन्च किया था सेम कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कि देखो कोई इंस्ट्रूमेंट अभी ऐसा नहीं है जिसमें पहला फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आया उसको लॉस बिल्कुल बच जाए वो लॉसेस से, राइट. ऐसा कोई कहानी प्योर स्मॉल केसेस बन रहे थे या प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थे, ठीक है. हालांकि हाइब्रिड भी होते हैं म्यूचुअल फंड, बट ठीक है इतना अगर आपको स्मॉल केस पर्सपेक्टिव से बताऊं मैं. और दूसरा ये पॉइंट था कि अगर पहला इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता है तो फिर आता नहीं है कोई मार्केट में रिटर्न करने. और तीसरा पॉइंट था कि हमको रिटर्न भी ऐसे देने हैं जो कि एफडी से ऊपर रहे, ताकि उसका वेल्थ जनरेटिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट किक इन करे. तो ये 3 पॉइंट्स मेन थे टू किक आउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि जो फर्स्ट टाइम लोग हैं आप मत आओ स्मॉल के प्योर इक्विटी बास्केट्स में, आप ये खरीद लो. यस, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, राइट. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जो आप बात कर रहे हो कि पहले ही इन्वेस्टमेंट खराब हो जाए तो नहीं होगा, पहले आके देखोगे. अगर आपने 6 महीने भी जैसे एडब्ल्यूआई जैसे किसी भी जैसे एडब्ल्यूआई तो हमारे थ्रू क्रिएटेड है और बाय कैपिटल, किसी भी और मैनेजर का अगर किसी ने कुछ बनाया हुआ है सो आप आके एक बार टेस्ट करो, एक बार उसको खरीदो एंड बी इन दैट फॉर 2 क्वार्टर्स, ठीक है. आप चेक करो रीबैलेंसेस कैसे हो रहे हैं, कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो कैसे बिहेव कर रहा है, आप समझ में आ जाएगा आपको चीजें, मतलब काफी कंफर्टेबल हो जाओगे आप उसके बाद. देन मूव ऑन टू प्योर इक्विटी बास्केट्स प्रिसाइजली एंड यू अंडरस्टैंड द रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, देन मूव ऑन टू प्योर इक्विटी बास्केट्स. उसके बाद द जर्नी बिकम्स वेरी इजी. आप कभी जाओगे नहीं छोड़ के अगर पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा, right. So this is also one of the important points which Smallcase as a whole covers for diversification. यहाँ पे मैं एक psychological यहाँ पे बस एक psychological fact I will like introduce is known as कि हमारे brain का एक part called nucleus accumbens. वो हमारा जो है ना basically reward center होता है हमारे brain का, and वो manage करता है कि हम कितने risk averse हैं या हमारी risk appetite high है.
तो अगर इस पार्ट को अगर फील हुआ कि ना यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, वो हमारे को उस एक्शन को लेने से पहले ही रोक देगा। और वहीं पे हमारी ये बात आती है कि द पर्सन हु एक्चुअली मेड अ लॉस ऑन देयर वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, वहां पे उनका ब्रेन उन्हें साइकोलॉजिकली ट्रिगर कर देगा दैट यू नो व्हाट, दिस इज नॉट फॉर मी। करेक्ट, आप पहले लॉस कर गए। हाँ, एग्जैक्टली, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दिस इज अ वेरी ह्यूमन नेचर यार, मतलब यस, वी हैव बीन रीडिंग अ एग्जैक्टली, लॉट ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स के बुक्स एंड आर्टिकल्स, यही बातें कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सही है कि मतलब एंकरिंग बायस, रीसेंसी बायस, ये वाला भी एक बायस है कि मतलब आप आओगे नहीं। सो मतलब दिस इज नॉट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, और ये रहने वाला है मार्केट में, इसको ये हट नहीं राइट, सकता। देखो जब तक ये रहेगा मार्केट में, it's not it's you cannot remove these kind of biases in the market. This is like normal human nature. So we'll be robots if we are not doing this. you're right. मतलब किसी में अगर ये biases नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन यार सब में होती है like 80% लोग। Yes, I agree 100%. Okay, so my next question for you is that who is the ideal person that Smallcase is built for, keeping in mind कि जो है who is the complete ideal use case for Smallcase? So ideal use case तो ऐसे है भुवन्यु की, I mean जो हम इतनी भी बातें कर रहे हैं अभी कि आप फर्स्ट टाइम मार्केट में आए, ठीक है, you can be 23 years of age who was entering into the job market. Let's say my dad who's retired, 60 years of age, ठीक है, he's recently retired. तो अब दो एक्सट्रीम एंड है आपके स्केल के, ठीक है, दोनों के लिए यूज केसेस है स्मॉल केस। ओके, ठीक है, कि आप ये पूछ रहे हो ना कि स्मॉल केस एज अ मतलब who is it for? Yes, who is it for? Right. Yes. Now it is for everyone who wants to invest. Okay. Right, in some of the other way. अब किसी को इन्वेस्ट कर आना ही नहीं है मार्केट में, तो उसकी क्या ही मतलब, तो फिर आर्गुमेंट ही फ्लॉट हो गया। जैसे देयर आर सम पीपल इनको सिर्फ रियल एस्टेट ही पसंद है तो वो उसी में करते हैं लाइफ पर, राइट। लेकिन कंसीडरिंग के somebody who is coming for the first time, या जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया एंड ही इज ओल्ड एज का है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स कि आप आके कौन सी चीज खरीद रहे हो, ठीक है, क्योंकि hundreds of small cases, each small case serves a purpose. Yes. ठीक है, जैसे हमने रिसेंटली होराइजन स्मॉल केस लॉन्च की, ठीक है, तो होराइजन स्मॉल केस इज लाइक कि आपका कोई भी गोल है, ठीक है, 20 साल बाद 15 साल बाद आप उसमें पैसा डालते रहो, ठीक है, और वो मैक्सिमाइज कर देगा आपकी वो वैल्यू 20 साल बाद, राइट, ठीक है। राइट। आप किसी को स्मॉल हु इज दिस फॉर, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है आज तक, उसको लेकिन एक गोल है उसकी लाइफ में कि यार मेरा 20 इयर्स बाद मेरे को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बहुत कॉमन गोल्स होते हैं, या मेरे को अर्ली रिटायरमेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, रिटायरमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। ओके, तो आप उसमें आप पैसा डालो और दिस बिकम्स अ यूज केस कि दैट इज अ गोल फॉर यू और ये मेरा यूज केस, ठीक है, मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी चाहिए, ठीक है। सो आई विल चूज दोस काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज। फिर इफ यू आर यंग, जैसे आप 25 years of age, right, 65 जो भी है, उसके बाद it's like कि you can take risk more than obviously a guy who retired at the age of 60. So for you there are some pure equity baskets, जैसे momentum baskets हैं, factor baskets हैं बहुत सारी, quality small cases, all these things, या a very good themes like IT themes, EV themes, right, electric vehicle, तो ये सब आजकल hot themes चल रही हैं, right. Some are very quantitative in nature, some are pretty much like fundamental plus a mix of technical in nature. So you need to diversify among themes also, that also you can do. So किसी को जैसे purely बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको स्ट्रैटेजी जनरली समझ में नहीं आती है, जैसे ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनको क्या है जैसे मोमेंटम समझ में आ रहा है ज्यादा, तो आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी खरीद सकते हो, राइट। कुछ लोग होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल we keep on hearing around us कि यार डेली मतलब न्यूज़पेपर में आजकल people talks about PSU banks or maybe IT theme, electric vehicle, right. So आप उन themes में अगर आपको exposure चाहिए तो कैसे लेंगे? स्मॉल केस के थ्रू, राइट। देयर आर स्मॉल केसेस जो बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, इस पे इंडिया क्लीन एनर्जी शिफ्ट कर रहा है, उसके ऊपर एक स्मॉल केस है, तो आप उसके थ्रू एक्सपोजर ले सकते हो। सो एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी। देन कुछ लोग हैं जिनको थीम्स भी नहीं पता, मोमेंटम टाइप्स चीजें नहीं पता, बट दे वांट टू इन्वेस्ट, सो उसके लिए देन देयर आर लाइक एसेट एलोकेशन स्कीम्स, लाइक आप ऑल वेदर इज क्या करता है, आपका इक्विटी में भी है, गोल्ड में भी है, फिक्स में भी है, एंड इट मिक्सेस एंड मैचेस अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी, तो आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मतलब हर एज ग्रुप, whether you're 39, you're 60 or 25,
and your risk appetite, you can choose small cases. Okay. If you have heard some themes and you want to specifically choose those are also there. Okay. If you have not heard, go with very simple asset allocation models. अपना base बनाइए, अपनी education बनाइए, and then उसके बाद you move on to a much maybe more riskier baskets, pure stocks baskets. Right. So it is like for every age group, every risk appetite anyone can invest it. But to be very frank, like I'm not even lying. Like if my dad asks me what to do with retirement money, I can simply say to him कि आप Horizon या all weather में डाल सकते हो. क्योंकि वो है, हमने खुद personally be very much invested because it's very stable things. It's not going to go anywhere, right? So उस तरीके से. So I'll share my own personal experience here. So I have invested in the dividend aristocrats. All whether I found it to be a little too easy for me. So उसमें constituents क्या है? All weather investments के मैंने बहुत ढंग से नहीं पढ़ा उसे. हाँ, तो all weather is very all weather में सिर्फ 4 constituents हैं और 3 asset class है. हाँ तो बताइए. Asset class है gold, आपका cash, which is debt kind of instruments, और तीसरा equity. Okay. Yeah. Equity में 2 components के से exposure लिया जाता है, Nifty और Nifty Next 50. Okay. तो आपका Nifty top 100. Top 100 हो गया. हाँ. उसको exposure लेने के लिए 2 ETF यूज किए हुए हैं. एक गोल्ड के लिए है, एक अपना कैश के लिए होगा. So only 4 components. Okay. 3 asset classes, 4 instruments. ठीक है. और हम किसी को मतलब underlying strategies की मतलब it rebalances every quarter and depending on the risk on and off mode in the broader markets, it keeps on changing the weights of these asset classes. Okay. ठीक है. Interesting. So this is So this is the ये बहुत ही यही है, simple है और कुछ भी नहीं है. Nice. और this is do wonders and this is one of the very classic example कि मतलब simplicity can do wonders, right? Simplicity always beats complexity. ये just देख लिया है. So this has been मतलब हमको भी पहले लगता था कि we were not very much sure initially when we started कि मतलब is this statement even true or what, but this is a live example that this statement is very true and obviously. Interesting. So it's very simple as I told you. This is the composition and this is how we have made. Okay. So now you said that the Windmill Capital by itself is a research arm for Smallcase. Smallcase. Yeah, but Smallcase I believe launched earlier, right? Yeah, Smallcase started in 2015. Okay. And we were working in the team. We were creating Smallcases, all the underlying infra, research, infra, tech, infra, everything. Yeah. And I think the first time we launched in 2016. Yeah. When the portfolios or Smallcases were made available to the retail investors to invest in. Yeah. But when did actually Windmill Capital became? Oh, okay. So we were anyways, as I told you, the team was same. We were research arm. We are still the research arm. We got started in 2019 because RA का जो एक license होता है ना आपको portfolios बनाने के लिए. Research analyst वाला. तो वो corporate license Windmill के पास है. तो उसको regulatory reasons के लिए भी thought के it's better कि एक अलग से subsidiary बना के we can carve it out. That's the only reason. Otherwise, for all practical purposes, the team is same. So so was it purchased by this Windmill say the RA license? हाँ, we took an RA license. Windmill के पास RA license है, corporate license, and obviously all the analysts which work at the Windmill, उनके पास individual they also need to clear that exam of CFA. And then NISM का exam होता है, which is the RA exam that you have to clear. Okay. Say part of the research analyst team. To be part of the research analyst team. So NISM exam, how difficult is it if somebody actually wants to join the Windmill Capital team? Can you elaborate more on that? Yeah, I mean, we look for it's pretty easy actually. But if somebody wants to join, मतलब हम लोग बहुत तरीके की small cases बनाते हैं, which involves pure fundamental knowledge, technical, quantitative, right? Yes. Sector knowledge. We make our own databases also. Right. Yes. हम future में maybe दूसरे asset class में भी venture करेंगे, not even Indian stocks. So we just see, obviously the qualification should be the must. Yes. But even if your experience level थोड़ा सा होता है तो better होता है. I mean CFA and FRM, though these are not the top priorities for us to look for, but it's an added on. If it is good, if you have done, it's good. Right? Okay. Otherwise, we talk to the candidates. मतलब this is a pure process है, किसी को ज्वाइन करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो. और
स्मॉल केस में मतलब जॉब ओपनिंग आती रहती हैं. वी आल्सो कीप ऑन पुटिंग अप फॉर एनालिस्ट एंड एसोसिएट रोल्स. उसके बाद फिर देयर इज अ प्रॉपर मतलब वी हैव सम इंटरनल processes and assignments also, through Okay. which mainly the assignment is the part which we judge properly. So Okay. वहाँ से काफी clarity आ जाता है कि how the candidate is. So ठीक है. तो अभी तक हमने बात करी कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं या स्मॉल केस जो है कैसे बिगिनर मिस्टेक्स को एलिमिनेट करता है. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू आस्क यू व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू मेड अभिषेक. आई वांट टू नो कि जब आपने स्टॉक मार्केट में एंटर किया और पोर्टफोलियोज के बारे में आपने नहीं सोचा था, आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी सो दैट पीपल वुड लर्न फ्रॉम. So when as I told you, I joined after college as an investment bank. We were making these basket for institutional clients, the Asia Pacific region. Yes. And उस समय हम खुद भी इन्वेस्ट करते नहीं थे स्टॉक्स में, इंडियन स्टॉक्स में नहीं करते थे, म्यूचुअल फंड्स में करते थे, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स. So पहली बार मतलब you get a salary, first point is की ELSS. Yes. So उस समय म्यूचुअल फंड डायरेक्ट और रेगुलर भी नहीं पता था. So I did my first one in regular in 2014. So yeah, so but we had the knowledge of not the Indian stocks, but I say the stocks in the in the China, Japan, Hong Kong region, because that was like the geography I was looking at. Okay. Pehli baar, yeah, as I told you, the first exposure personal investment was in mutual funds, and then when I joined Smallcase 1.5 years back, only I left the firm and joined Smallcase. So Smallcase, maybe the first investment was Smallcase only, obviously. तो हमेशा से वो पोर्टफोलियो अप्रोच ही रहा है, तो इतना कुछ ज्यादा कभी ऐसा नुकसान या कोई मिस्टेक नहीं हुई. बट आई रिमेम्बर उस समय क्या होता था, हम लोग क्या इंटरनली बैठ के ना कुछ स्टॉक्स होते हैं ना जिन पे सर्किट लगता है. यस यस. अपर सर्किट और लोअर सर्किट, उसमें हम लोग ऐसे कभी ऐसे बैठ के ना रिस्क लेने के लिए ऐसे कुछ जाते थे. सो जैसे आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज स्टॉक कॉल्ड मंदाना इंडस्ट्रीज. उसमें बहुत सर्किट लगते थे उस टाइम पे 2016 17 में. So like 5% ऊपर जा रहा है, 5% नीचे जा रहा है. तो हम जब मतलब when we are entering, 2 days went for 10%, 5%. तीसरे दिन से डाउन. ठीक है, और डाउन सर्किट में निकलने का मौका ही नहीं मिलता. So it's like continuously going down. There is no buyer on the counter. Yes, yes. तो मतलब उसमें उस तरीके से बहुत सिंगल स्टॉक में देखा जाए तो 2-3 ऐसे स्टॉक थे उस समय जिसमें दो हमारा अमाउंट उतना था नहीं. ऐसा नहीं है कि हम लाखों पे खेल रहे हो, हजारों में, मतलब इट वाज लाइक 50K या 40K जो भी है आपका अमाउंट. उतना लॉस नहीं होता था. बट दिस वाज अ वेरी मतलब स्टूपिड नहीं बोलूंगा, मतलब इट वाज अ लर्निंग. ठीक है, मतलब उस समय भी सिंगल स्टॉक में लर्निंग कर रहे हो कि किस तरीके से काम कर रहे हैं ये स्टॉक्स. तो दैट वाज वन मिस्टेक. उसके बाद कभी वी नेवर पुट आवर मनी इनटू दिस सर्किट हिटिंग स्टॉक्स एज सच. Okay. उसके अलावा Bhuvanyu, I think all this trading, like we also wanted to try our hands on because we have been pure equity Yes. side of things. Yes. So again, it was we did some options on indexes, Nifty, Bank Nifty, single stock maybe we did. Yeah, it was not even the liquid market, but yeah, again the payoff is pretty huge, right? 1 point if stock like PNB moves, you will make like $7,000. So if it moves, PNB is the most swing traded stock of all time. Yeah, मतलब उस समय था. I'm just giving you an example. ऐसे और भी stocks हैं. Yeah. So yeah, I remember once I lost like actually I slept off, and in the morning when I wake up it was already 9:30, right? And it was an overnight position in a single stock future. So it went down $7. Okay. 7 49,000. 49,000 lost. So this is that was a very worst thing to happen. And yeah, that's one anecdote to share. After that, never venture into single stock because there was no plan. I'm not saying this is bad, but you should have a plan to invest in stock, single stock futures and options. Absolutely. So, I mean, though we are just remembering and laughing at those incidents, but that was a good learning experience. कि आपके पास कोई position sizing नहीं है. आपने overnight position carry करी, कितने सारे risk हैं इसमें, ठीक है? आपको position sizing का पता नहीं है, आपने overnight risk लिया, आपने कोई risk management strategy लगाई, और आप just because it was going up and down, you put your money and you say कि मतलब 5 points favor में गया तो I will make 35,000. But again, it reversed happened. So for these instruments, I think for trading, उसके बाद then we did for some time, but ठीक है, मतलब थोड़ा structured होके index में first you start some option strategy on index. But options futures में तो आपका I think tax भी बहुत this transaction taxes बहुत लग जाते हैं. Options में वो नहीं होता. So that's one thing to start with options and stick to Nifty for some time.
then move to bank nifty. तो मतलब ये mistakes single stocks में mistakes उनकी शुरू में. Two things I told you. One is the single stock futures and other one was the circuit hitters जो होते थे. Circuit trading, हाँ. उसके बाद I think like I never venture into that category because उसके बाद उतना time नहीं होता है. आप already इतना involved होते हैं अपने work में कि proper risk management बनाने का खुद के लिए होता नहीं है. Plus there was a lot of regulatory issues also. So like I never did it. So it's like pure normal small case investing, mutual fund investing is what we do currently. So would you call yourself lucky in a way that you did not like make a lots of mistakes? Because even मेरा भी, if I remember, there's only one stock that I make a mistake on. उसपे ज़्यादा पैसे नहीं डाले थे, but it was future retail. Okay. और future retail का आपको पता ही है क्या हुआ है. Correct. So is it a recent incident for you, right? Yeah, so I started my investment journey when in 2020 itself. I started reading up a lot of things और YouTube पे इतना सारा free का ज्ञान मिल रहा था. I was like वो बटोर रहा था. And then the news came कि जो है ना Reliance has decided to buy future retail. So I thought that this is going to actually like blow up. So then I put in a reasonable amount of money. बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. But yeah, that was my mistake in this case. Yeah, correct. तो वही है सिंगल स्टॉक्स में मतलब लॉट ऑफ टाइम्स न्यूज़ आती रहती हैं ऐसे ऐसे. पूना which company was that जिसमें this पूना वाला गाइड देते think of कंपनी ना पूना आधार पूना वाला इन्वेस्टमेंट. हाँ, there was a NBFC which was started hitting circuit. I forgot the name of that company. I'm not able to remember as well. Yeah, it was hitting circuits as soon as that acquisition news came in the market. So Yes. All these news, yeah, these are coming on a daily basis. Invesco में ये Z के साथ हुआ था. Z was a large cap stock. It was like top 50 का stock है वो तो. Yes. फिर अदानी के साथ it happened, right? हाँ. अदानी the पूरा अदानी ग्रुप वो तो ऐसे ही हुआ था. So people do make money actually in these incidents. If you are on the right side of the trend, if you know how to make your manage your risk, you will make money. But Yeah, precisely. But मेरी जैसे मिस्टेक थी उसमें यही था कि हम लोग randomly बिना कोई प्लान के बिना कोई स्ट्रक्चर के we used to enter, which was a very bad thing to do, and I think it is advisable कोई भी किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए don't do it, make a plan and do it. Yes. We are not saying on this call कि this is bad. We are saying Yes. कि plan होना चाहिए. Plan के साथ आप करो, you can make. Yeah, exactly. और यहाँ पे भी ना जहाँ पे tips वाला culture है now, I don't know if you've heard this news, but SEBI is like focused on Telegram channels जिसपे बहुत सारे tips पढ़ती हैं. They are going to close down all of these Telegram groups. Recently, I think अभी कुछ raid हुई थी, if I'm not wrong. हाँ ये recent news ही है. Last week this news actually came out. So I have not been in this kind of game जो tips पे rely करें, but मेरा रहता है कि ना at least whenever I'm talking about a stock और मेरा YouTube channel पे every Saturday I do a research. So उस पे मेरा हमेशा disclaimer रहता है that do your own research. I can only guide you through the P&L sheet or I can look through the balance sheet for you. But at the end of the day, अगर आप अपनी research नहीं कर रहे, if you are not going through the annual reports, तुम्हारा ही पैसा है ना वो जिसपे तुम आग लगा रहे हो. Correct, true. But people are like इस YouTuber ने बोला है, इस YouTuber ने ये बोला है, चलो ये अच्छा ही होगा, स्टॉक खरीदते हैं. And it's not like YouTubers are not credible. They are credible folks. But तुम लोगों को क्यों भी research करना है? Correct. Some YouTubers are मतलब ठीक है credible होते हैं, but कुछ उतना डिटेल में आके check भी नहीं करते before they come and make a video out of it. So that is also one of the things which people should not. That's why I blindly follow any influencer. एक ये भी है market काफी. And since the advent of this COVID now, since 2020, a lot of people have come. Right, they're talking about a lot of stuff. Like finance has blown up very big. Like since pandemic, I don't know how it happened, but finance became the next cool thing after entrepreneurship. Correct. So okay. So यहाँ पे आप जो है ना, like my next question for you would be like, how can a person who has just entered the stock market, अभी सिर्फ डीमैट अकाउंट बनाया है, they are curious, and how should they actually take Smallcase? How should they get started with Smallcase? ठीक है. तो मतलब I would say कि as you know कि Smallcase आप पहले तो इन्वेस्ट करने के एवेन्यूज बता देता हूँ. So smallcase.com वेबसाइट, Smallcase ऐप या जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपने डीमैट बनाया उसकी खुद की एक Smallcase वेबसाइट होगी, राइट? तो वहां पे जाके सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट बनाइए, लॉग इन करिए ब्रोकर के थ्रू, अपने ब्रोकर कैट्स के थ्रू. बहुत सारी बास्केट Smallcases you will find there. Okay. Right. So now Smallcase actually .com पे there are a lot of filters, ठीक है, which help you guide first. If you are the first time investor, ठीक है, पूरा flow है. Yeah. ठीक है. Like there's a flow called Find Me a Smallcase.
जिसमें there's a flow in which the platform takes you कि अगर आप first time investor हो, आपका risk level कितना है, उस हिसाब से it helps you in your journey. Then there are some filters, like for example minimum investment amount का filter है, which tells you कि अगर आप 25,000 से नीचे invest करना चाहते हो तो आप वो basket select कर लो. उसके top of that, if you want to have low risk start करिएगा, इससे low risk basket से अगर start करना है, तो वहाँ पे एक risk category भी है that you can check. किसी को सीधा high risk से करना है वो भी कर सकते हो आप, ठीक है. Then you can check like historical charts, but I would always say कि आप live charts ही देखो, back tested पे ना focus नहीं होना चाहिए लोगों का. Get yourself comfortable with the strategy. एक बार देख लो कि कितना churn होता है उसमें, rebalance मतलब कितना होता है. जैसे कुछ लोग क्या होता है weekly rebalance करते हैं. Some managers do weekly rebalance because there are some strategies जो rule based strategies हैं, वो weekly churn you have to do it. There are some strategies which are quarterly or annually also. जैसे dividends to friends है जो आपने example दिया था, that is annual. तो हम उसको annual में एक बार churn हो रहा है. So some people are pretty much comfortable with those strategies because they don't want to come on the weekly basis पे, monthly basis पे, time नहीं उनके पास, या they may miss out important rebalance notification. तो अपनी मतलब time के हिसाब से, अपनी कितना आप time दे पाओगे उस हिसाब से आप strategy select करो जो कम churn की हो, कम risk की हो, और try out करो platform. This is how you should start your journey. और उसमें भी अगर आपको let's say I always say कि if you are coming for the first time, you should नहीं मतलब, but it's a caution है कि आप पहले ऐसे लोकेशन मॉडल से स्टार्ट करो, एक बार फ्लो देख लो, एंड देन वंस यू बिकम कंफर्टेबल मूव ऑन टू प्योर इक्विटी स्टॉक्स, राइट, प्योर इक्विटी बास्केट्स. सो दिस इज हाउ द होल फ्लो इज. आप smallcase.com पे जाके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन कि कितनी रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी है, एक बार आप उसके डिस्क्रिप्शन पेज पे डिस्कवर भी पढ़ सकते हो. जैसे आपको ईवी में ही करना है, अगर आप यही सोच के आए हो कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल टीम में करना है, तो कुछ बास्केट्स होंगी, उसमें से आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर लीजिए जो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे या क्लीन टेक्नोलॉजी में काम कर रही है. देन कुछ बास्केट्स हैं, अगर आपको डिजिटल इंडिया पसंद है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो भी नए स्टार्टअप्स जैसे स्टॉक्स हैं जो लॉन्च हुए हैं, या जो स्टॉक्स ऐसे जो डिजिटल इंडिया को लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल्स में काम करते हैं, जो मतलब इंफ्रा बना रहे हैं उसका, राइट, उनकी कोई बास्केट्स हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. सो वो काफी नीश हो गया बिकॉज आप एक बना के आयो कि नहीं मेरे को यही चाहिए, बट अगर ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है आपके, फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग टू द प्लेटफॉर्म, देन वो जो पहले मैंने बोला उस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हो smallcase.com पे, और अपने हिसाब से smallcase सेलेक्ट करके देन यू कैन बाय इट. सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, एंड यू कैन बाय, ट्रैक इट ऑन अ ऐप पे आप ट्रैक कर सकते हो, ऐप से भी खरीद सकते हो ऑब्वियसली. फिर आके आप देयर आर लॉट ऑफ रीबैलेंस नोटिफिकेशन आपको आ जाता है, आप सिर्फ सेटअप कर सकते हो, राइट. जब भी आपके पास ज्यादा, जैसे किसी महीने ज्यादा कैश आ गया, सरप्लस है, तो आपको इन्वेस्ट मोर करना है, कोई अच्छी बास्केट लग गया तो इन्वेस्ट मोर कर दो आपके मुझे, या कोई दूसरी बास्केट, बाय द टाइम कोई दूसरी बास्केट खरीद लीजिए, आपने एक खरीदा फिर आपको वापस आगे देना. सो दिस इज हाउ द होल फ्लो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इंट्यूटिव, और बट हाँ, दिस इज हाउ द रिटेल इन्वेस्टर्स शुड डिस्कवर एंड make the use of the platform. And Smallcase team as a team, मतलब they have brought a lot of transparency related features. They are coming up with a lot of transparency features के risk कैसे define करना है, पहले back test दिखाते थे, वो हटाया, ठीक है, only live data is there because कई बार people you know fudge and the back test data को भी problem है. Then उसके बाद I think in the coming up versions उन्होंने पूरा cost का एक calculator बनाया है कि अगर आप किसी Smallcase में invest करते हो तो कितना cost आपको लगेगा, ठीक है, उसका पूरा एक टाइमलाइन है. हाँ, I've seen that. That is beautiful. Brokerage also, हाँ, सब कुछ है उसमें. उसका एक रिवैम्प्ड वर्जन भी अभी लॉन्च होगा. फिर पुराने जितने रीबैलेंसेस आपके हुए, ठीक है, वो भी आने वाले हैं कि आप पूरा चेक कर लो, आप बी कंफर्टेबल विद द Smallcase. So these are all transparency which the platform is bringing, and I think it should be pretty intuitive and easy to operate via app, via.com, anything for the retail investors. So this is how they can start their journey. I think this is the best thing. So यहाँ पे एक मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, whenever a rebalancing comes, जब भी हुई किसी भी स्टॉक की, and you were like sitting on a 10% gain or 12% gain आपकी rebalancing का, how does the tax implication of this thing works? वो मेरे को बहुत confuse करता है personally. अच्छा, तो you are saying you are sitting on a 10% gain. So let's, for example, I invested $10,000 in all weather investing, ठीक है, उसकी quarterly rebalancing हुई, and I was sitting on a profit on some amount में, उसकी rebalancing में I sold off a couple of shares and added new shares, replace करती है. How does the tax implication of that work? So yeah, it's simple. मतलब अगर किसी भी Smallcase में कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो प्रॉफिट में चल रहे होंगे,
कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो लॉस में चल रहे होंगे, राइट? Yeah. सो जब पोर्टफोलियो रीशफल होता है, ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स वैसे रहते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, राइट? Okay. सो कोई स्टॉक प्रॉफिट पे है एंड यू आर सेलिंग इट, ठीक है, और आपने वो स्टॉक उस स्मॉल केस में लेट्स से मैनेजर ने विद इन 1 ईयर ही इज आस्किंग यू टू बाय एंड सेल, तो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स उस पे लगेगा 15%. 15%. But one thing to note here, when you are selling a stock which is in loss, तो आप ऑफसेट भी कर सकते हो. Yes, ठीक है, I heard about that. तो करेक्ट. तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़ीरोधा की प्लेटफॉर्म पे आती हूँ, सो काइट गिव्स एन एक्सेल शीट जिसमें आपका पूरा ट्रेड्स होता है और आप लॉस आपने सीए को दे दो, आपको पूरा लॉस ऑफसेट करके बता देगा कितना टैक्स आपको देना. Yes. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग कि चर्निंग में खाली प्रॉफिट वाले ही नहीं बेच रहे हैं, हम लॉस वाले ही बेच रहे हैं, तो ऑफसेट हो रहा है. द सेकंड थिंग इज कि जो हाई चर्न स्ट्रेटजी है उसमें ज्यादा होगा ये, राइट? उसमें आप काफी ज्यादा बार बेचोगे, खरीदोगे, बट हाँ, अगर 1 ईयर के अंदर है तो टैक्स तो लगेगा. इफ लेट्स से अगर कोई पोर्टफोलियो का सारे स्टॉक्स ऊपर है, उसमें से आपने 5 बेच दिए, तो उन पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल देना पड़ेगा. लेकिन वो 1 साल से पहले से आप खरीदोगे तो ऑब्वियसली 10% होता है 1 लाख के ऊपर रूल लगेगा. तो दिस इज हाउ द टैक्स इम्प्लीकेशन, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप खरीद तो स्टॉक्स ही रहे हो ना, आपके डीमैट में आ रहे हैं. Yes. स्मॉल केस एज अ कंपनी कुछ रखता नहीं अपने पास, मतलब वो बास्केट ही बनाता है सिर्फ. बास्केट बनाते हैं मैनेजर्स आके और आप खरीदते हो, उससे बेचते हो, आते हैं वो आपकी डीमैट में ही है. सो जस्ट वर्क्स लाइक अ नॉर्मल सिंगल स्टॉक्स. इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे ना फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड आई विल एक्सप्लेन. यहाँ पे मेरे को बिजनेस मॉडल भी समझना है स्मॉल केस का. तो स्मॉल केस मेक्स मनी ऑफ द फीस दैट जितने भी मैनेजर्स आ रखे हैं उस पे उनको ही तो दे मेक मनी. द सेकंड इज जैसे दिस आई बिलीव 100-150 रुपीस चार्ज जो एनुअली आई थिंक कटता है. But what are the other modes of payment that through which small case actually makes money? Like, what is the core business model of small case? If you can explain. So, Bhuvanyu, I think small case के बारे में I won't be the right person to talk about the business model. मतलब मेरे को Windmill का पता है. Okay. But yeah, broadly यही 2 charges हैं if I'm not wrong. एक तो per small case 100 rupees. Yes. I think उनके charges जो उन्होंने लिख रखे हैं अपने वेबसाइट पे वही charges कटते हैं. पर small case 100 rupees. और उसके बाद फ्री स्मॉल केस आप खरीद रहे हो तो कोई चार्ज नहीं. हाँ, उस पे नहीं. स्मॉल केस खरीद रहे हो आप तो आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल. यस. ओके, इंटरेस्टिंग. तो आप मेरे को विंडमिल का ही बता दो बिजनेस मॉडल. आई वुड लव टू नो. सेम थिंग. हाँ, तो भुवन्यू विंडमिल भी पहले हम लोग फ्री स्मॉल केसेस थे, अभी भी फ्री स्मॉल केस बनाते हैं, पेड भी बनाते हैं. लाइक ऑलवेज इज फ्री, वी डोंट चार्ज एनीथिंग. लॉट ऑफ फ्री स्मॉल केसेस आर देयर, एंड देन देयर इज अ पेड कैटेगरी ऑफ currently 15 small cases हैं उसमें. So we have a flat subscription model. Anybody who wants to buy the Windmill Capital paid small case subscription है, आप 6,000 rupees annual the charge is. So you buy that, you pay 6,000 and all the 15 small cases unlocks for you. आप फिर किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो 15 में से, depending on आपको क्या अच्छा लग रहा है, right? So we don't, as Windmill के एक small case पे pricing नहीं है कि X small case पे 1,000, second small case में 3,000, right? Okay. It's just not this is a difference to understand. We don't have a small case level pricing. We have a whole package. You buy the package, everything gets unlocked, right? It's just like when Netflix में आप buy कर लेते हो तो सारी movies unlock हो जाती है ना, फिर movie में जाके पैसा नहीं देते. Correct? That's the same thing. So this is how we charge. So that's the paid category, and free में तो we don't charge it. Interesting. So you mentioned something about horizon based investing, और वहाँ पे मैं उसका blog पढ़ रहा था before even starting this call. So can you explain that to me, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया. I just read 20-30% of it. मेरे को उसके बारे में जानना है. तो coming to horizon, so when you जैसे मैंने बताया था कि 3 साल पहले हमने always investing launch किया था, तो 3 पॉइंट्स है दिमाग में कि पहले इन्वेस्टर जब आता है उसको लॉस नहीं हो जाए, ताकि वो अपनी जर्नी मेंटेन करे, एंड कुछ ऐसा रिटर्न हो जो एफडी से ज्यादा हो, ताकि वेल्थ क्रिएशन भी हो, राइट? दीस आर ब्रॉड पॉइंट्स टू मेक दैट थिंग. When we were making this horizon, the thing was कि there are a lot of goal-based investing का culture ना. A lot of robo advisors are there internationally. India में भी बहुत सारे robo advisors हैं जो आपको बोलते हैं कि आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लो कि आपको 25 साल में चाहिए आप, और वो आपको बैक कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये बताते थे कि आपको 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना रहेगा या 12,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना रहेगा, राइट? दिस इज जनरली व्हाट हैपेंस इन रोबो एडवाइजिंग, राइट? और फिर उस मनी को एलोकेट करने के लिए आपको बताते रहेंगे कि आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन है वो भी, कि आप ये पैसा कितना किस में जाना है. We always thought कि sometimes let's say when we are doing a SIP or anything, right? Yeah. I might don't have money to invest at that particular month. Yeah. Because some problem, the family emergency has come, right?
Absolutely. So the whole calculation goes bizarre because I would want to. So we were thinking in this goal-based investing should be in such a way that whenever you have cash, you invest. Okay. I'm not going to dictate you have to compulsory invest 10,000 every month. Okay. Okay. Whenever you have cash, you deploy. My target is to maximize the value of your investment at the target year, which is your goal year. Okay. ठीक है. अब एक और चीज है, जैसे some people say कि यार retirement portfolio है, उसका ये stock constituent है, एक children fund होता है, maybe marriage fund हो गया, उसके अलग चल रहा है, ठीक है. तो let's say you have two goals. Yeah. You want to buy a car, you want to buy a house 15 years down the line. Okay. ठीक है. Yeah. Why should the portfolio, the goal-based portfolio which you're investing, should have different constituents? Meaning? There is no logic to it. अगर गोल कुछ भी हो, आपको तो मैक्सिमाइज करना है ना अपना पैसा. Yes. 15 साल बाद. Yes. Correct. Yeah. So that is also one of the philosophies which we are trying to two three important points which we have अलग हटके हैं जो नॉर्मली जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब जनरली जो लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल जिस तरीके से लोग पढ़ाते हैं, दो तीन फिलॉसफी इसमें अलग ही है. पहला पॉइंट तो हो गया कि जब भी आपके पास कैश है इन्वेस्ट करने के लिए, यू मेक द इन्वेस्टमेंट. वी आर नॉट गोना से कि आप मंथली आके डालो. सेकंड पॉइंट इज गोल कुछ भी हो, जो टारगेट ईयर सेलेक्ट करना है, दैट इज व्हाट यू कैन डू कि 2035 या 2040. Once that is selected, you keep on putting money in that particular horizon portfolio. जैसे horizon 2040 में आपने सेलेक्ट किया हुआ, which is like 20 years down the line from now, 19 years down the line. Okay. So over the next 18 years, you keep on investing into it. ठीक है. Whenever you have surplus cash with you, investable cash, right? Yeah. The job of the portfolio is, the job of this particular small case is to maximize your value at 2040 once you are standing at 2040. That is simple. That this is the simple concept. Okay. गोल कुछ भी हो, horizon 2040 है, 2040 ईयर है, तो भी गोल आपके 2040 में ही एक्सपायर हो रहा है, तो सबके लिए अलग पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, एक ही पोर्टफोलियो चाहिए आपको. राइट. क्योंकि आप चाहे गाड़ी खरीदो चाहे घर खरीदो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि गाड़ी जब खरीद रहे हो तो वो पोर्टफोलियो आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, घर वाले से ज्यादा करोगे नहीं ना. You got it right. I'm saying गोल कुछ भी हो, तो फाइनल आउटकम इंटेंट ऑफ द पोर्टफोलियो इज कि आपकी टर्मिनल वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है. आउटकम मैक्सिमाइज करना है. इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए जब भी आपके पास आए, ठीक है. उसकी भी कोई कंपल्सन नहीं है कि मंथली आके करना ही करना है. Whenever you have cash, you do investment. The goal of the horizon small cases is to maximize the value at the terminal year or the target year for a particular investor, which in case may be 2040 for you, but for me it is actually 2050. तो मैंने वो portfolio खरीदा हुआ. Okay. So this is the goal horizon small cases which we have launched. It's a bouquet of 6 small cases, 5 years की gap पे हैं. तो अब किसी का obviously किसी का अगर 2037 target year है, तो वो nearest portfolio choose कर ले 2035 का. Right. So that is one thing. So and then again dynamic asset allocation in all the horizon small cases, and the way we do it is शुरू में in the initial years of the investment, more money will go to, let's say, equity. Yes. Like we are more risk on approach. As you approach the target year, it is a risk of approach in which the money gets shifted to more conservative assets like bond ETFs maybe. Yeah. Okay. So this is the whole flow. So that एक बहुत interesting point ये था, इसमें जब हम backtest कर रहे थे just to see कि हमारी hypothesis काम कर रही है कि नहीं कर रही है. So if you see the second article जिसमें पूरी backtesting समझाई हुई है इसकी, हमने different base periods लिए हैं 2003, 4, 5, 6, 7, ठीक है. And we start all the portfolios in different base years, considering कि 15 साल आप roll over कर लो सारे portfolios, ठीक है. Simple. We are seeing कि अगर if somebody in 2005 had a goal in 2020, yes, so he would have bought 15 years horizon portfolio, 2020 horizon. Yes. So had we not shifted his constituent or his allocation towards conservative asset, he would have lost all his money in corona crash. तो मतलब 14 years में जो wealth amass किया वो 15वें साल चला गया. Right. तो ये dynamic asset allocation का जो पूरा path है ना, this is what generally called, it's called glide path investing. There's a term for it. Okay. But this is also, it's like, this means कि initial years में more aggressive, which is risk on approach, and as you approach your looking for growth initially you are looking for growth and then उसके बाद पहुंच के preservation. Preservation. हाँ भाई, exactly. Okay.
So one of the blogs that you were like I was going through had this quote. What comes to your mind when you hear this quote on successful investing is about managing risk, not avoiding it? What does it mean to you? Correct. It's very simple. अगर मैं रिस्क ही अवॉइड करना है मेरे को तो मैं जाके एफडी आरडी खरीद लूंगा. मेरे को रिस्क ही नहीं है, कभी रिस्क नहीं है, मेरे को पैसा आता रहेगा, राइट? बट these kind of instruments are not wealth creating instrument. आप wealth कैसे बनाओगे? आप इन्फ्लेशन ही बीट नहीं कर पाओगे. 15 years down the line, FD आपको सेम इंटरेस्ट दे रहा है, let's say whatever कम दे रहा है, maybe interest rate may go down, nobody knows. But those are not compounding interest instruments, right? तो आपको compounding के लिए आपको इक्विटी में आना ही पड़ेगा. Like some form or the other. The second thing is, so that is why you cannot avoid the risk. Zero तो नहीं हो सकता, ठीक है? Minimize कैसे करना है? Minimize ऐसे करना है कि आप डाइवर्सिफाई. पहली बात तो स्मॉल केस जैसे आप इन्वेस्ट करते हो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है बिकॉज़ ऑफ पोर्टफोलियो अप्रोच, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वाला एंगल आ गया आपका, ठीक है? ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपने 110,000 रुपीस किए और कल 5,000 का 50% मार्केट, अनलेस मतलब इंडिया में ही कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि 50% गिर गया, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. Second, start if you are not comfortable with taking larger risk, as I have been telling throughout this conversation, start with some low risk opportunity like all weather हो गया, horizon हो गया, और भी कोई होगा, मतलब ETF पोर्टफोलियो आप पिक कर लो, ETF स्टार्ट करिए. अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को आप एक बार एनालाइज कर लो, कितना ले सकते हो. अगर आपको ज्यादा लगता है कि नहीं आई एम कंफर्टेबल, आई कैन नाउ मूव टू मोर रिस्क ऑन अप्रोच, देन गो एंड बाय टू इक्विटी बास्केट्स, राइट? तो रिस्क मिनिमाइज आप ऐसे कर सकते हो कि अच्छे पोर्टफोलियोज मतलब सेलेक्ट करके या एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो सेलेक्ट करके जो कंपाउंड भी कर रहे हैं, आपका वेल्थ भी कंपाउंड कर रहे हैं 10 12 whatever 15% से, और यू आर मेकिंग वेल्थ आल्सो एंड द रिस्क इज आल्सो वेरी लेस. सो दिस इज कॉल्ड अ minimizing the risk framework which everyone should follow in the life, right? So this is very, like, this is how it should be done. It's like we all in our lives are doing the same thing. Instead of reading everything you read, nobody is fully invested in FDs. Nobody, मतलब FD is also important. I am not saying कि मतलब कभी बोलता ही नहीं हो लोगों से कि मतलब आप FD मत करो. बहुत से लोग देखे मैंने बोलते हैं कि FD बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. Like there is one influencer जो बोलता है, we all know about it. पता नहीं, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट मैं तो अपने सर्कल की बता रहा हूँ आपको. बट व्हाट आई थिंक इज कि यार 6 months में यू नीड अ फिक्स्ड इनकम, यू नीड अ फिक्स्ड इनकम. तो आप क्या इक्विटी में थोड़ा डालोगे पैसा? फिर तो यू मतलब अगर बिल्कुल ही चाहिए तो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो इंस्ट्रूमेंट. इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली अनअवॉइडेबल, बट एक बात जानने की जरूरत है कि एफडी इज नॉट अ वेल्थ मेकिंग इंस्ट्रूमेंट. It's a preservation instrument. So preservation, आप फिक्स्ड चाहिए, आपको कुछ इमरजेंसीज के लिए आपको करिए, वो करिए आप. बट आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे आना पड़ेगा, व्हिच इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, व्हाटएवर. डेट म्यूचुअल फंड्स में भी होती है बट कम इंटरेस्ट रेट है, बट या इक्विटी स्मॉल केसेस, योर सिंगल स्टॉक्स, व्हाटएवर, पोर्टफोलियो अप्रोच, एंड ऑलवेज स्टिक टू अ पोर्टफोलियो अप्रोच obviously. So according to you, FD would be the instrument that should be used if you are like building your emergency fund. इमरजेंसी फंड में आप बहुत सारे ना म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड्स में कोई म्यूचुअल बैंकिंग म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड्स है, राइट? उसमें भी वैसे थोड़ा सा रिस्क होता है, लाइक फ्रैंकलिन टेम्पल के साथ जो हुआ था यूएस बैक, मतलब पेमेंट्स ही they have released the payments right now, like after 2 years. They block everything at that time, so उसमें भी थोड़ा रिस्क है. बट again, the bond mutual fund is like keep on increasing because they get the payments from the underlying companies. So उसमें risk होता नहीं. So that's the one thing you can have in park in your emergency fund. Overnight liquid funds हो गए, ठीक है? और अगर आपको let's say कि you need some fixed cash after 6 months, you need it. You know that you need it, right? So go to an FD ना. हाँ, okay. अब आप थोड़ा जाके आप कोई इक्विटी में खरीदोगे, वही इक्विटी डाउन है 15% डाउन, तो क्या करोगे 6 months बाद? हाँ, ये बात I believe I agree here. पूरा सेंस बन रही है इस बात की. मतलब हर इंस्ट्रूमेंट का एक यूज है, आप उसको यूज अच्छे से करो, so your life will be like utilized effectively, basically. Yes. Actually cool. Okay. हाँ, ये इंटरेस्टिंग है. So one thing I want to actually ask you about on personal finance. So why is there not enough literacy in our country about financial literacy or related to finance related activities? ऐसा क्या है? क्योंकि अभी हमने we have only what क्या 2% या 3% penetration in the capital market पूरे इंडिया में, and then there is like everyone talks about FD या फिर वो म्यूचुअल फंड फिर भी कुछ लोग ले लेते हैं. What do you think is the reason कि ऐसा क्यों है? Financial literacy क्यों कम है? Is this the question? Financial literacy क्यों कम है, and
why are people like not even willing to listen कि ऐसा क्यों होता है? नहीं भुवन, I think इस पे I will have a contradicting view. अभी कम है but बढ़ रही है. We were 1%, मतलब कितने डीमैट 1 करोड़ से भी कम डीमैट अकाउंट थे 2020 के पहले. Obviously COVID was a big boost because a lot of knowledge went on online and people were started making actively use of that knowledge. अकाउंट खुलवाया, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, किसी ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, राइट. कहीं ना कहीं से मतलब people have started doing this. Now I think कितने CDSL के स्टेटमेंट आया था, if I'm not wrong, they have opened 6 crore demat accounts. Yes. CDSL, right? Yes. So there's a big jump here in 2 years. Look at the growth, right? So this is gonna increase with time. We are obviously was a developing country. When it goes from a developing to a more developed country, there's a path which everyone follows, right? It's like US में 42% लोगों के पास maybe demat है, India में 2% के पास है. वो 10 होगा, 20 होगा. Over the time होगा ही होगा, right? And मतलब same thing goes with like banks also. पहले banks का penetration used to be very less. Now the banks have started expanding into NBFC, expanding into rural markets, right? Yes. A lot of people now take loans there. पहले accessible नहीं था. तो मतलब वो जो the jam mission with जनधन में accounts खुलवाना और वो सब करना, right? वो सब penetration बढ़ाने के लिए था. Similarly, in equity market also penetration is increasing. With knowledge, more people will obviously come into the markets, invest. And I think with the new मतलब वही millennial generation, which a lot of people target also, they are well versed with the instruments, with the knowledge online, and I think it should be a good boom coming in the coming years in this particular sector. So financial literacy is increasing was increasing before COVID at a maybe less space. After COVID got a big boom, and not sure how it's going to pan out in the next 5 years, but we are pretty much bullish actually as a manager of Windmill Capital, and I think whole ecosystem of Smallcase, that this is what they are playing out, that it's going to increase. More people will come. They will realize the importance of these wealth compounding instruments, and how can they drastically affect their life after 20 years as compared to a non-wealth compounding instrument. So yeah, so this calls for another question. So how long do you think like we will have from 2% to 10 to 12% of people who will be entering the markets and actively investing or not trading, ideally not trading? What would be the time horizon? अभी नहीं है, I think 2 से बढ़ गया होगा. 6 crore the demand CDSL has opened. Whatever 3, 4, 5%, whatever is there, I'm not commenting about the exact number. Time taking only, it's a very hard thing to predict. I don't know, from 5 to 15 it can go in the next 5 years also. The next 10 years also it may take, right? Unless and until obviously the government shouldn't come with any such kind of regulations, which is like very detrimental to the market. So कई बार regulations ऐसे आ जाती हैं which kind of halts the growth. Yes. Right. So that should also happen, and this whole culture of influencers or good teaching which is happening right now on the digital channels. Yes. Will definitely help people come, and I think, I think 10 years में हो जाएगी. Nice. That's interesting. If you have a 100 crore population, let's assume 15 CR should be demat account holders, and it should be 5-10 years. In 10 years. It should still need to go to tier 2, tier 3 में थोड़ा हो रहा है वैसे, obviously as I'm telling. Yes, but, I agree. See, वही थोड़ी सी वो generation वाली problem थी, like our parents. Yeah, we actually came out of an economical trauma. Our parents never invested in the markets, and that's a big middle class, lower middle class, rural markets in India. So the new generation which is coming is now more digitalized. So once you become digitalized, obviously the amount of knowledge and the amount of avenues for you increases. And nobody, I don't think is there anybody who has after reading and after gaining so much information about the markets will be like, no, I will not invest. I don't like it. ऐसा तो कोई होगा नहीं. Because this is a positive instrument only, which is going to help you succeed in your life and make wealth. So it's all about getting to know and getting exposure first time to that kind of knowledge. Interesting. So यहाँ पे अब एक सवाल है मेरे दिमाग में, which like throughout the conversation that I just got in my mind, what is your investing thesis like? Your personal investment thesis? So very personal. So I have started off over the last 2-3 years. Pretty much I do SIP in some small cases which I have selected. Yes. ELSS मेरा चलता है. For tax saving, मैंने 2-3-4 small case ले रखे हैं. Obviously AWI is one of them. और उसमें I keep on doing SIPs whenever I have investable cash. Yes. Maybe
इस मंथ में ज्यादा कर लूं, अगले मंथ थोड़ा कम करूं, but keep on doing this और keep on distributing my money into those small cases. ठीक है. So purely, to be very frank, I have only small cases and equity mutual funds. और उसमें भी like one thing that I want to ask here is that कि do you invest in theme based small cases? Yes, correct. I have a mix. Let's say if I'm very much bullish on IT industry of India for the next 10 years, Yes. I have selected such kind of small cases. Right. There are some pure model small cases, maybe like multi-factor small cases, which works on quality and volatility, select stocks based on that. Asset allocation models like all weather. So it's a mix of everything. And I keep on also explore the small cases being put by other managers also, and maybe try to see what they are doing and maybe invest into it. But yeah, it's like open to all, but not doing like 10 small cases at this moment, because that's like overly diversifying yourself. You should stick to some 3, 4, 5, Okay, whatever, depending on your risk appetite is, but concentrate on this and build your wealth over them. Now these 5 may be different for me, 5 can be different for you, but underlying idea should be the same. Diversify basically. You can actually start with one also, to be very frank. But as I told you, you can start with it, stick with 1 year, then move on to the second small case, which would be your pure equity small case, right? So that becomes your second small case. Then you saw that after 2 years, maybe a new theme comes in the Indian market, and you are very bullish on it, right? We don't know sitting right now, but let's say after 5 years, let's say Web 3.0 and crypto is very strong right now, but there are no listed instruments on National Stock Exchange which are working into these kind of businesses, right? Okay. But five years down the line, let's say there's some is the EV has the same problem with it. When we were making the theme in 2016-17, they were not listed enough companies. Okay. Theme new था ना, जैसे there's a company called Sona BLW Precision, ठीक है? I've heard of that. Sona BLW 3-4 years back, they were not doing anything in EV. Okay. Now 30-35% their business is EV. Order. People are actually realizing इसमें तो like we should thank Elon Musk a lot. Ola is into EV. Yes. But Ola listed ही नहीं है. But then there are companies that are providing OEMs. तो बहुत सारी थीम ऐसी होती हैं जिनको आप अच्छी होती हैं on papers, but there is no listed instruments इसके थ्रू आप exposure बना ले सकते हो. Right. So EV में same problem था 3-4 years. अभी बहुत सारी companies हो गई हैं ऐसी, जैसा हम कहीं सोना BLW हो गया, या let's say Amar Raja battery. Yeah, batteries हो गया, some power companies are like Tata Power हो गया, companies हो गई, या the companies like maybe जिनके petrol pumps होते हैं, they are diversifying to this and making EV infra, right? So this is a group mix of जो अभी आई हैं, जिनके business model change हुए हैं पिछले 3-4 years में, and now they have become more relevant to the EV, right? So now they are good instruments. Now starting today, like Web 3.0 or crypto, and maybe they are not good enough companies जो listed भी हैं. Theme is hot, but are there enough sufficient listed companies? No. Through which you can make a theme out of and make a small piece out of it. So that is not. मुझे सिर्फ 2 ही पता है मुझे भी. 5 years down the line, maybe the whole banda is कि maybe there was a theme. So 5 years down the line, I may buy that small piece. Okay. Right, which is currently in non-existent. So you can keep on looking in the market कि क्या चल रहा है, and based on that, form your portfolios and keep on sticking to it. Make SIPs. For your emergency, actually you can withdraw also, because partial withdrawal is always allowed in small case. So कभी भी कर सकते हो आप. But yeah, stick to it. Checklist approach है यार, मतलब पूरी के आप stick करो. If you want to really become financially independent, there's no other way. Patience. Okay. So one thing that you actually mentioned was that there is a new feature is being launched on Smallcase. Can you tell me anything about it? Like छोटा सा secret. Which feature? A particular feature that you spoke about that might be getting launched soon on Smallcase. एक तो revamp हो रहा है cost calculator का, so it's one thing. Okay. And I think दूसरा एक जो feature आने वाला है वो ये होगा कि अपने पुराने या से rebalances किसी भी small case के देख सकते हो. Okay. But you sold off or what you didn't sell off like that. नहीं, जैसे suppose करिए कि electric vehicle small case में पिछले 4 years में since the small case is live कुछ 8 rebalance हो चुके हैं, 8 rebalances have been done. So उसकी history के कब हुआ rebalance, कितने stock अंदर गए आ रहा है. Those kind of things will be there जो अभी है नहीं. So that will help the investor to better take decisions कि कितना churn होता है इसमें, या
कितने rebalances गए हैं, just to take an informed decision. So this is, I think, this is something on the similar lines they're coming. Interesting. So this is my last question, and I have taken too much of your time, to be very honest here. हमारा 1 घंटे से ऊपर हो गया, हमें पता नहीं लगा बातें करते करते. Yeah, it's a very interesting topic. So yeah. Yeah. So any kind of book recommendation or for a beginner who's सिर्फ अपना DMAT account बनाया and they just want to start with their journey. Any book recommendation or any blog recommendations or anything जिससे वो start कर सके अपनी journey to becoming financially independent. I think Bhuvanyu, to be very frank, nowadays now the best thing is to start with YouTube पे जाओ, videos देखो, ठीक है, अगर आप beginner हो, जितनी knowledge आपको वहां से मिले, I won't name any channel, but मैं personally बता रहा हूँ. Okay. पहली बात तो कम टाइम में ज्यादा knowledge आ जाती है ना, वो वाला फंडा. Yeah, that's the funda which is applicable here, right? Yes. The book you have to read through it, and yes. books के the problem है the good books which people talk about के security analysis and one of the Wall Street very good fund managers. Yeah. Benjamin Graham सब पढ़ रहे हैं, right? So I have one thing to it. Okay. Books are ordinary 30-40 years back in US. Yes. Fundas are not applicable in current markets sometimes. Sometimes the economy में aspects अलग होते हैं, regulations अलग होता है, so papers are not there. So good starting point. Very common book list है, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी. Like Benjamin Graham का हो गया या Warren Buffett के letters हो गए, all these things. Quantitative investing के लिए you can read Wesley and Gray. It's a very good books of quantitative investing. I like them a lot. And then another thing, second thing is straight away this take on getting from this YouTube channel. Right. So for anybody who has come, I would suggest पहले basic कोई fundamental या technical या कुछ भी इस तरीके का आप YouTube channel देख लीजिए. A lot of things are available. Then move on to books. आप ज़्यादा better समझ पाओगे. Okay. तो यहाँ पे मैं अपना चैनल प्रमोट करूँगा कि मैं हर सैटरडे जो है ना लाइव इन्वेस्टिंग करता हूँ. और वो देखो कैसे. क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जल्दी आ जाती है वहाँ से. वो बुक पढ़ना पे आसान होता है. हाँ, I agree. Making a sense of it कि यार value investing क्या है? What is quality business? Yes. What is a wonderful price or a wonderful business or a quality price? So yes. Margin of safety क्या होता है? Right. तो वो जल्दी समझ में आता है. तो because 15 minutes के टॉपिक में या 10 minutes के टॉपिक में people understand. Are able to learn faster. हाँ, I agree. Like visual medium, it's good. Should be other. This is my personal opinion, but again, it's debatable. But this is what, if you ask me, this is what I will follow. Even a lot of what I have learned is also I've learned from YouTube. Like काफी मेरे को knowledge मिली है from some of the big guys who are like in finance. So I agree with your statement कि ना book से पढ़ने में ना book पढ़ना आसान नहीं है. Like people say it's very easy to read book नहीं पढ़ पाता हर इंसान. So it's better to like look at YouTube or read some blogs for those who are considering to start. नहीं, book you do read, but after this. हाँ. क्योंकि in-depth analysis वहीं से आएगा. Yes, I agree. कभी in-depth analysis नहीं आ सकता. You're right. That is also one of the cons. So yeah, but it becomes easy for you to pick the topics once you're on. Yes. So I think it's time that we stop the recording. If people want to get in touch with you, can you like post your socials or anything if they want to ask you for anything? Yeah, Windmill Capital की dedicated website है. Okay. Smallcase.com. वहाँ पे all the portfolios are there, everything is there. उसके अलावा if people want to get in touch with us, there's they can get in touch on a Twitter. So we have a dedicated Twitter channel, Windmill Capital, and there's an email ID which I'm gonna be sharing, like support@windmill.capital. So you can post any query there, and if you have any difficulty in getting to know the portfolios of Windmill Capital, you can inquire there also. So an email Twitter channel. Total channel is obviously the go-to place for many people, and yeah, you can check out the website. Yeah, वो सारे links in description. There will be all the links in description for this. Sure.